Good afternoon, everyone. We have 74 participants, 76 participants as of now, and I think it's already 4:30 and we can start our program. All of us know that today is very important topic for discussion, contemporary topic, GST 2.0. Prime Minister Modi recently announced the reforms and as they call it, the next gen GST. So we are going to discuss about that. All of you know about the rates, but we'll just take 5 minutes to discuss the rates and then we'll switch to the implications and the questions of impact on businesses. And there are certain issues, there are questions which have started coming in from several corners, from different clients and professionals. So we'll be discussing all those issues and some interesting issues as to how it will impact the transitory transactions. So friends, today we have, as all of you know, three persons to answer our questions. We have Rahul Lakhwani, senior partner of Chiramrit, and he's heading the indirect tax division at Chiramrit. He has been with Chiramrit for about 15 years now. And since beginning for last 15 years, he has been focusing on indirect taxes. There are several judgments to his credit at several forums, including SESTAT, High Court, and Supreme Court. And with that, I'll introduce our next panelist today. And Mr. Arvind Khicha is our next panelist. And Mr. Khicha is right now the joint managing director at joint president at Yes, Free Cement Limited and joint president commercial, as they call it. And he's in charge for overseeing the taxation as well as insurance part of the company. And he has been with this company for very long. And apart from being a chartered accountant, he has mastered the art of management and managing the affairs of the company. He's involved into all senior management decisions at the company. And when we get questions from Mr. Khicha, we have to apply our mind twice or thrice because we know that before sending a question to us, he has already applied the mind 4 times and he's trying to trick the law. And therefore, we have to be very, very sure before we answer to him. So Mr. Khicha is with us to good answer. noon, everyone. I am Arvind Khicha. So nice of you to Jawar Sahab that he has given a good kickoff to the entire introductory actually session. And thankful to Rahul and Mohit Jaju also to have a welcome actually introduction over here. Thank you. Next, I'll introduce Mohit Jaju. Mohit is a young entrepreneur and promoter. Apart from real estate, a very prominent real estate company at Jaipur, uh, uh, Mohit is also heading the operations of JKJ Airports, which is handling many of the airports. There are airport handling services with this company. So they are doing both the things, and the growth in both the businesses are so high that in next 5 years, they'll be leading the market in both the places. So Thank you for the introduction. with that introduction, let's start with the today's subject. And before we start with the subject, we all know that the focus of the Prime Minister's speech on the Independence Day, so far as GST was concerned, or the FM's clarification subsequently, all has been that there'll be two primary rates of taxation now. Instead of multiple rates, there'll be two primary rates, and those two primary rates would be 5 and 18. And we used to have 12, we used to have 28. So now they say we'll be having two primary rates, 5 and 18. And then they say there'll be some items which will have zero duty. There'll be some items which will have 40% tax. Earlier, there was 28% tax, GST, plus cess. But now that instead of a combo of tax and cess, on certain items like luxury vehicles, it'll be 40%. Although on the items like tobacco,
it'll be 40% plus cess also. So you don't have 28% and 12% rate now. You have 5% as one prominent rate and 18% as another prominent rate. Of course, there are certain items as exception, which are at nil, and the exception on the other side, which are at 40%. So Rahul, before we begin the discussion, today's discussion, I'd like to just ask you a very preliminary question as to, can you tell us what are the items on which tax has been curtailed or reduced? So maybe it was 12 or whatever rate, and now it has been reduced. Can you just show us on the screen what are those items? Yes. Good evening, everyone. So, very brief, I would take up some important items. Rest you can see on our screen. So, there are certain items for which the old rate was 12% and that has been brought down to 5%, and goods and services both. The list is available. What you can see here, some are butter, ghee, because the packed one were considered as something to be charged at an extra rate. Later on, now when they have removed this 12% slab, that has reduced to 5. So that you can see on the screen. Then there are certain items on which the can you please move on the next slide? So there are certain items which has moved from 12% to even on a higher side. That is the new rate, 18%. Now, next, 12% to exempted. There are certain items which are which has moved from 12% directly to the exemption list. Certain items. No tax on these items. Yes, no tax on these items, considering them as essentialities. 28% to 18%. And interestingly, can you go back to your previous slide? Yes. Interestingly, apart from the drugs, you have paper pulp and you have something related to education, maps, charts, globes, exercise books and notebooks and stationery. All these are nil. And then life insurance policy is nil, not the medical insurance. The health insurance is also there. Health insurance is also there. Yes. Health insurance is also nil. So whether it is health insurance or life insurance, those policies are at nil rate of tax. They are exempt. Yes. Certain from 28% to 18%. Interestingly, the motor vehicles, that is four-wheeler and two-wheelers of a particular class, which has been brought from 28% to 18% with a certain size description which is available on the screen. The small cars for which the engine capacity has to be checked, and similarly on motorcycles with a particular engine capacity, they have reduced from 28% to 18%, and rest of the item, say electronic items, air conditioning, इसका मतलब ये है कि जो गाड़ियां 28% पे होती थी, उनमें से कुछ गाड़ियां तो 18 पे आ जाएगी, कुछ 40 पे चली जाएगी। गाड़ियों पे अब 28 की कोई रेट नहीं है। अगर लग्जरी कैटेगरी की है तो 40 पे चली जाएगी, और मिडिल क्लास के यूज की है तो 18 पे आ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि 28% स्लैब हटा दिया है उन्होंने। राइट। Can you move on the next? So certain items which has moved from 28% to 40%, they are also on the list. Importantly, अगर अपन बात करें इसके अंदर, अगर हम देखना चाहे तो containing मोटर व्हीकल की बात हम जो कर रहे थे, 28 से 40 पर आ गए हैं लग्जरी व्हीकल, but still the final price may not increase because earlier there was a cess and now there is not, right? Yes. सेस की वजह से एक डिफरेंस आएगा, और अभी हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो एब्सोल्यूट रेट कट उतने परसेंट का नहीं होने वाला, बिकॉज देयर आर अदर पैरामीटर्स आल्सो व्हिच वी विल डिस्कस इन आवर स्लाइड. सो दैट्स अ ग्लिम्प्स ऑफ कि क्या रीशफलिंग हुई है टैक्स रेट में, फॉर कंसिडरेशन ऑफ द ऑडियंस प्लीज. Right. So I'll straightway come to Kicha Sahab with this. So Kicha Sahab, सीमेंट की प्राइस, सीमेंट का रेट कट हुआ है, and it was shown in one of the slides where there is a rate cut in cement. So सीमेंट की प्राइसेस डाउन आएगी, जो अल्टीमेटली कंज्यूमर को मार्केट में सीमेंट मिलता है, those rates would come down. Certainly, Devaji and all my colleagues who are on the board, सीमेंट की प्राइसेस में जो एक मेजर कट आया है 28 से 18% होने का, इसका इम्पैक्ट एंटायर इकोनॉमी पे होने वाला है. हम लोग दो तरह से देख रहे हैं इसको. व्हाट इज द ग्रोथ
of नो, पहले तो आप ये बताइए कि वो सीमेंट की मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि प्राइस का क्या सीमेंट की इम्पैक्ट आएगा, मैं उसी पे आ रहा सीमेंट हूँ। की रेट कट होने से हाँ, 10% सीमेंट रेट कट हुई है, तो क्या सभी लोग हम समझ लें कि सीमेंट के भाव 10% से घटने वाले हैं नहीं, और some other इतना impact? इतना कम नहीं होगा। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द रेट शुड कम अराउंड 15 रुपीज पर बैग मैक्सिमम। The reason behind it is कि there are certain costs which we have to incur more. That is thermal power cost is increase in the cost of generation on account of increase in actually GST on coal. Whatever power plants which are stationed and supplying the power to the cement division, we have to incur more cost on account of GST. One. Second is the new units which are coming up in the state under the certain incentive policies were having the lower benefit of subsidy for certain initial years. वो जो कॉस्ट हमको एडिशनल लगने वाली है सब्सिडी कट की, वो भी हमको सेट ऑफ करनी ही पड़ेगी। तो दो रीजन है कि हम एकदम पूरा पास ऑन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी लार्जली 15 रुपए बैग के आसपास का कट आ जाना चाहिए, पहला। सेकंड है, डिमांड इतनी सर्ज होनी है। अगर डिमांड भी 6-7% के हिसाब से ग्रोथ हम लोग लेके चल रहे थे, वो 9-10% के आसपास मिनिमम आ जानी चाहिए। And India right now is operating at 70% of capacity of the plant available. Vis-a-vis now we are expecting that we'll be able to have a plant utilization capacity of 80%. With this, certainly there will be certain costs will come down also. The fixed cost will come down. The subsidy cost will increase. Thermal power cost will certainly increase, but rest of cost will be coming down. And all GST is subject to ITC. Vis-a-vis, there is no cost impact literally to the cement industry at all. So, according to you, the prices would definitely come down, but not to the extent of GST reduction. Correct. There'll be some absorption of cost, and it'll come down by little less amount, like you are saying, 15 rupees per bag or something like that. Yes, yes. Mohit, one initial question just on this, on supplementary on the reply of Arvind Kichaji. You are a builder, and in building line, apart from iron and steel and other things, cement is a very big component. And because the cement prices are coming down, not so substantially, but yes, they are coming down. So you have already promised to deliver certain flats or villas to your buyers, and there is a contracted price fixed. The delivery has to happen in next 3 years or 4 years or 5 years because you have signed up the contract only last year or now. Now what you are going to do? Suppose 50 लाख में आपने फ्लैट बेचने का ट्रांजैक्शन किया या विला बेचने का ट्रांजैक्शन किया। अब उसमें आपने XYZ सीमेंट की कॉस्ट लगाई होगी, अब सीमेंट की कॉस्ट तो घटने वाली है, आप बनाओगे अब। तो अब क्या वो कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस, क्या वो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा या वो बायर को बेनिफिट मिल जाएगा? दोनों में से क्या होने वाला है? तो आई थिंक आई वुड अग्री टू मिस्टर अरविंद खींचा कि जो टोटल इम्पैक्ट है वो 10% टोटल सीमेंट का पूरा पास ऑन होगा नहीं। उसका इम्पैक्ट जो रियल टाइम हमको ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे पड़ेगा, दैट वुड बी एनीवेयर बिटवीन 0.7 to 0.8% ऑफ द टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। एंड एट बेस्ट टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, यस, सो एट बेस्ट इट वुड बी 1%, जो अभी हमारे एस्टिमेट भी कह रहे हैं। सो बट इसका एक पार्ट ये भी है कि लास्ट 2 साल में इन्फ्लेशन भी बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सब्सटैंशियली इंक्रीज भी हुई है। सो व्हाट इट विल एक्चुअली डू इज कि आगे जो हमारा प्राइस हाइक नेक्स्ट होता वो शायद डिले हो जाएगा या कम हो जाएगा। प्रॉब्ली जो हमको इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग प्राइस हाइक करना पड़ता है वो हम कम करेंगे या नहीं करेंगे फॉर नेक्स्ट 6 to 9 months और प्रॉब्ली एन ईयर। बट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जो फ्लैट्स बिक चुके हैं, उसके अंदर तो कुछ भी पास ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट सब्सटैंशियल एंड वी विल हैव मोर क्लैरिटी इन नेक्स्ट 6 to 9 months. Okay, so according to you, there'll be no ultimate benefit to the home buyers if they've already booked, and because what you are saying would apply to the entire industry, if the benefit is just less than 1% in the construction cost, then
everybody would like to absorb in the increased or enhanced cost due to inflation rather than passing it on to the consumers, right? Correct. And Rahul, I would like to come to you on this point. Whether there is a law, like there used to be a law earlier, that vendors have to compulsorily pass on the benefit of rate cut to the consumers, and otherwise there were penalties on the vendors, right? Whether this time also similar law has been brought out, or there are provisions that if the benefits are not being passed on, then there are some penal actions, or there is no such requirement in the law. So, anti-profiting provision were there in the law Anti-profiteering provisions were there Yes. earlier. earlier. Whether they have been brought now. No. So they resigned that in 2025 because there was a lot of calculation which was required, and the penalty was levied on many, I would say, companies in FMCG sector, and also in terms of some real estate companies also. But this time the FM has given a kind of clarification during press media briefing that they are not going to get this by way of force. The demand and supply in the market will play a role. For say, if there is a builder who's efficient enough and calculate what is the thing, what is the reduction in their cost price, and based upon that, they are able to put more discounts and can get more customers. They are saying demand and supply in the pricing will automatically take care of this. We are not going to do it forcefully. So now they are going to work on efficient side. In effect, what you are trying to say is that if Mohit's flat is good for 50 lakhs as compared to some other builder, then Correct. people will buy it. If he wants to increase his sale, then because of the demand and supply, he can reduce or increase the prices, not because of this. And Yes. that demand and supply would play a role in the price enhancement or Correct. price reduction, Yes. and not the GST cut. So Is the that efficient right? will prevail. Efficient will prevail. Right, right. So coming to my next question, Rahul, there is a round of confusion going on in the market, and I can see that from a lot of WhatsApp messages these days, that whosoever is going in that 5% regime, whatever items are going in the 5% regime, there'll be no input tax credit available to them, and therefore you have to choose either between 5% or input tax credit. Please clarify this, because there are a lot of messages going in WhatsApp these days. Please clarify this. No, this is not absolute in terms कि अगर 5% rate हो गया तो अब आपको ITC नहीं मिलेगा. Yes, there are certain sectors where they have brought out these provisions. Earlier it was used to be in restaurant, it is continuing. The same they have brought in, for an example, in the hotel industry also. They have suggested that rooms with a tariff of less than 7,500, 5% rate without ITC. So there is a list of categorization of services where they are saying that if you want to go for 5%, it will be without ITC. However, it's not straightforward like this, that 5% bracket means there is no ITC available. For say daily use items, FFGG items, 5% the credit is allowed. The chain should not get big. But yes, So of like you gave the example of a hotel room. Hmm. There, if 5% is being charged, then no credit is allowed to the hotelier. So Yes, yes, effectively, the rate may not change, because earlier he was getting the credit, now he's not getting the credit, and he is charging 5%, right? yes. So And maybe similar on he- gym, he- I just want to take a pause. but however, here, if the slab is exact 7,000 right now, then the hotelier cannot increase the price. You know, if he is at 6,000, then he'll increase the price because he's not getting the input tax credit. But if he's already at 7,000, then he will not There's increase no the margin. price. There's no margin. There's no Yes. margin. So he'll not Yes. increase the price, and Yes. there the customer would be benefited. So if the hotel room was at 6,000, then the customer would not be benefited, because hotelier would make it 6,500 or something like that, because he's charging less tax to absorb his own input tax, which was earlier available, now not available. Whereas Correct. somebody who is availing a hotel room of 7,000, there the hotelier is, he's in a fix, because if he increases his hotel rate,
then the entire GST rate would change. Would change. Keep Yes. it at 7,000 and he will absorb, he'll bear the burden of Yes. ITC. its input tax credit to remain competitive in the market. Is that what you are saying? Correct. And I would like to give ask a supplementary. What are the other items like this on which if you avail 5%, then input There's tax no credit ITC. is not available? So to gym and spa services, the yoga center services, fitness center, basically what they are saying for them also, it was very costlier to pay 18% and then go with the ITC exercise, because predominantly they are services, even though in starting when they have to establish their equipments, but later on it's all value addition on account of services. So 18% is quite a higher rate. They are saying, give away your ITC and we are happy to charge 5% from you. And again, that would substantially reduce. Say any person who pay annual subscription, for them, there's a 13% reduction if someone see, and there's no ITC available to these kind of persons. So that is also one area where they are looking for that let's provide the relaxed rate to them. Sure. Now, so what I get from what you are saying is that ये जो services है उसमें ITC नहीं मिलेगा 5% जिन पर दिया है. अगर goods है कोई वहां मिलेगा, उस पे credit मिलेगा, right? बिल्कुल. And what are, can we just recap what are the goods item like butter, ghee, cheese? They're Yes. So actually again, we can cheaper because credit would also be available and 5% rate would also be there. Yes, yes. So they all are on the list, and particularly to Mohit, marble. Earlier, it was considered as an item of, I would say, which can be used only by those persons who can afford who are paying a higher amount. So for them also, they have reduced the rate that from 12 to 5 because they have removed the 12% slab. I remember there was a time where not because of income tax, but because of excise duty and sales tax, people used to buy marble in cash instead of buying through check. But now Correct. the rates on marble 5%. are reduced to 5%. Yes. That's amazing. That's amazing. Granite blocks or marble, it has become 5% from 12. Yes. Yeah. So And the ideology is also the very same what you have said, sir, that they wanted to increase the compliances. They wanted to promote the people that they should come in the system. That's why 12 to 5% will lead to, okay, let's pay 5%, take the bill, and instead to go into all hassles. Right. Kichaji, I'm coming to you for the next question. Say we discussed in the last question that whether your cement prices would reduce and to how much, and you explained 15 rupees a bag and why and all that. Now, I have another question for you, that you are buying several things for producing cement, right? You have several vendors, you are buying fuel, you are buying raw material, you are buying machineries, you are buying spare parts, and many of them are now available at a cheaper rate of GST. On them, GST is reduced. Would that not impact your cost, and would it not reduce your cost, impacting your cost of cement? And therefore, would that not impact your sale price? But largely, Emergy, the items which were procured by cement industry, that is raw material and spare machinery and parts, all are 18% now, number one. Number two, earlier we were availing ITC, we are paying tax and availing ITC. Today also we will pay the tax and avail the ITC. Yes, The you will be availing ITC. net price to me will remain same, and I will to have incur the output tax on the cement at 18%. Means whatever reduction cement price I am actually getting of GST output tax, which will be ultimate actually retention with me. So in fact, what you are saying is that there is, despite reduction of tax rate It's a on revenue your neutral. inputs, it would be tax neutral for you, because Yes. whatever, whether it was 100 rupees or now it has come down to 70 rupees, you were not building that same into your cost factor. Yes. You are getting the credit against your tax payable, so it will not impact your cost at all. Exactly. Reduction of the tax on input would not reduce your cost,
And the only impact which you are giving 15 rupees a bag is on account of the reduction of tax on the cement, not because of the. It is again, I'm telling, as Rahul is actually explaining well, it all depends on demand supply. That's right. That's right. Yes, and that cement is coming to completely Mohit. seasonal. Cement is completely a seasonal product. In the Cement. monsoon season, Arvindji, now cement is no more a seasonal product. For making production, it could be seasonal, but for a buyer and a user, no, no, no. and Mohit is one of the users, it is 365 days now. Construction goes on Exactly. every day. The consumption trend changes. In the summer, certainly we are having the highest consumption. In the winter, there is a less consumption. In the monsoon, very low consumption we do have, because the productivity of the labor Therefore, right now you are free for all the seminars. Thank you. It is a monsoon session, good rains this time. Yes. Mohit, coming to you, would it really impact the demand in the real estate sector? People would think that, like what you said, will not reduce the prices, but our increase would be delayed or postponed. This might happen, and this might happen across the real estate industry. Do you think that this would spur the demand? Now, for two reasons. One is this. Another is, because of a lot of reduction, people would have more money in their hand. Consumer would save taxes and they'll have more money in their hand. And they can be at ease. Their monthly expense bill of home would go down. They'll be able to bear more EMIs. And therefore, do you think that this is likely to impact or spur or increase the demand of the real estate sector? So I totally agree to this. So it is specific to more to us and companies similar to us who deal in middle income housing. So middle class के disposable पे जो income है, they spend on restaurant पे 18% GST था, वो अभी 5% हो गया, तो उनकी spending वहाँ होती है, वो बच गई. रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, बेसिक फूड आइटम्स, बेसिक मेडिकल इंश्योरेंस जो मिडिल इनकम को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है. इवन द कार्स 1500 सीसी से कम वाली जो कार्स हैं, जो 10 to 12 लाख की कैटेगरी वाली कार्स हैं, ये सब पे बड़ा इम्पैक्ट है. तो जो इनकम जो इनकी सेविंग है वो थोड़ी बढ़ गई है. सो आई फील दैट दिस विल डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट, एंड हमारा जो अगले 2-3 क्वार्टर का सेल्स टर्न अराउंड होना चाहिए वो बढ़ना चाहिए बाय एटलीस्ट मिनिमम 10 to 15%. Correct. Okay, all right. राहुल, कमिंग टू यू. ये मोहित ने बताया कि बहुत सारे सब लोगों के पैसे बचने वाले हैं और बचने वाले हैं, बैंक अकाउंट में पैसा ज्यादा होने वाला है, तो वो ईएमआई अफोर्डेबिलिटी उनकी बढ़ जाएगी, इसलिए हाउस बायर्स ज्यादा आएंगे. नाउ व्हाट इज योर थॉट? ये गवर्नमेंट ये सबको बेनिफिट दे रही है, इतना बड़ा बेनिफिट लार्ज पॉपुलेशन 140 करोड़ जनता को दे रही है इसेंशियल सारे आइटम पे, तो गवर्नमेंट इतना बड़ा हिट ले रही है, ये जीएसटी का हिट गवर्नमेंट खुद ले रही है, या कोई और एजेंडा है कि कोई हिट नहीं, गवर्नमेंट को कोई हिट नहीं होने वाला है? व्हाट डू यू थिंक? तो इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड हमें समझना पड़ेगा. डेटा रिलीज किया है प्रेस रिलीज के अंदर कि पिछले 4 सालों में रेवेन्यू कलेक्शन डबल हो चुका है जीएसटी का, विद 18% CAGR. So that what they have released. 8% CAGR मतलब हर साल 18% से बढ़ रहा है जीएसटी. Yes, 4 साल में डबल हो गया सर. फिगर ये है कि मंथली कलेक्शन 4 साल में डबल है. और इसमें इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर हाईलाइट किया. लास्ट ईयर का जो एवरेज मंथली कलेक्शन है, दैट इज 1.85 लाख करोड़. That is the last financial year I'm talking about. Or this 6 months financial year figure, what they have reported is around 2.10 lakh. Oh, double. What they are reporting. अब उनका कहना है कि भाई एक तो कंप्लाइंसेस लोगों के ठीक हो गए, क्योंकि जब चालू किया था सिर्फ 66 लाख रजिस्टर्ड थे जीएसटीएन पे, वो 1.1 करोड़ समथिंग, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट फिगर, वहां पे पहुंच चुके हैं. 1.4. थैंक यू मोहित. तो जब ये फिगर पहुंच चुका है, लोग कंप्लाइंस बढ़ा चुके हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने बहुत ज्यादा, हमने देखा, स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन किया. और पहले जो टैक्स एविजन होता था उसको उन्होंने प्रोसिक्यूशन वाले तरीके से, अरेस्ट वाले प्रोविजंस को रेवेन्यू अथॉरिटीज को देके बहुत ज्यादा टैक्स में जो लीकेज हो रहा था उसको कर्ब किया. अब उनको ये समझ में आ रहा है कि दिस इज अ करेक्ट टाइम जहां पे हम एक तो
स्लैब रेट्स को हटाएं, क्योंकि स्लैब रेट हटाने का मतलब है कि कुछ ना कुछ आपको कम या ज्यादा करना पड़ेगा, वो करें, और वो बेनिफिट अल्टीमेटली कंज्यूमर को पास ऑन करें, और वो कंज्यूमर जो होगा वो वापस डिमांड क्रिएट करेगा। क्लियर आइडिया? जैसे अभी आपने बताया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले पे जब अपना 15 अगस्त का राष्ट्र संबोधन किया, उन्होंने बोला ये मैं दिवाली का तोहफा दे रहा हूँ। और एक्चुअल में मोहित जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि आने वाले 6, 8, 10 महीने के अंदर हम देखेंगे कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी इसी पैसे से जो उन्होंने कमा लिया है, और ये मान के चल रहे हैं कि हम आगे नहीं कमाएंगे, लोगों के बीच में बांटते हैं, विच विल अगेन इंक्रीज दी कंजम्पशन, एंड कंजम्पशन क्योंकि इंक्रीज होगा तो वापस से वो टैक्स वहीं का वहीं आके इनको मिलेगा, बिकॉज more money in the circulation and more I would say collection of the government, and ultimately ये वहीं से सेट ऑफ होगा जो हम कंज्यूम करेंगे और खर्च करेंगे। तो गवर्नमेंट हिट नहीं लेने वाली है, दिस इज व्हाट देयर एस्टिमेशन, बट उन्होंने कहा है हमें So हमें what भी you are पता saying, लगेगा 6-8 महीने बाद। what you are saying really makes sense. What you are saying is that it is truly a Diwali gift. Yes, what was announced, it is truly a Diwali gift, but still there'll be no hit to the government for two reasons. You have told two reasons, one from the backdrop and another from the expectation of increased Yes. demand. So one reason which you have explained very well, given by you, that earlier the taxpayers were funding the persons who were evaders, because the evaders were not paying taxes, therefore the honest taxpayers were paying more taxes, right? And because now there is less evasion and the tax base is widened, and there are some persons, because in the neighborhood there is an arrest, therefore he also does not do any kind of clandestine sale or transactions, therefore there are more people who are tax compliant, and therefore tax base is increased, and that is why the rates are reduced. With this reduced rate, they'll be able to collect the same amount. Maybe there is an exception in first 6 months, but after that there'll be no loss to the government too, right? And perpetual effect, sir, perpetual effect, that Yes, this will yes. continue in the year coming forward. That's Yes, what the angle is. and further the motivation for evaders would also reduce. If the tax Yes. rates are like 5%, then what would remain the motivation of the tax जो हमने evaders? मार्बल की बात कर, मार्बल की बात करी, The cost of handling the evasion becomes is more more, than what he is actually expensive. and saving. tension also, and Yes. tension also, yes. Yes. So coming to Kicha Sahab, again back to you. And Mohit explained that everyone's monthly bill would reduce. And therefore, do you think that you will get your employees at a lesser cost now? Because employees have lesser cost to incur on their monthly household expenses. So whether Shree Cement would be able to grab the employees at a lesser amount, कि अभी तक जो 50,000 में मिलता था वो अब 40,000 में मिल जाएगा, there'll be that cost reduction. Do you expect that? डियर ऑल, जवाहर साहब, ऐसा है, इनकम टैक्स की रेट घटती है या टैक्स स्लैब एग्जम्पशन का बढ़ता है, उससे हम लोग सैलरी को एडजस्ट नहीं करते हैं। as being a good employer, and every industry and every entrepreneur to have this practice that they are not focusing on the what is the output tax employees incurring is. तो सारा part is फायदा एम्प्लॉइज की जेब में ही जाने वाला है। जाना है, और important part is their livelihood will be much better. They will be having good houses for their families. They will be having good education for their families, and ultimately happiness. चलो साहब, Happiness थैंक यू। quotient will increase. आपने कस्टमर्स को तो ज्यादा नहीं दिया, कम से कम एम्प्लॉइज को तो दे दिया। नहीं, happiness quotient will increase of the employees, the retention will increase, engagement will increase, finally profit will increase. Number one. Number two, I'm again repeating, customer will get the benefit. It's a matter of demand and supply. It's a matter of auto correction of the pricing. But right moment, on account of fuel cost, on account of curtailment of subsidy, rightly what we are availing on account of this level playing, actually level playing benefit with the old industry with new industry having high capex, we are having the cash of getting 15 rupees around reduction in the price at once. Right. So coming to Mohit again. Mohit, कई लोग जो बेनिफिट बता रहे हैं, आप लोग जो बेनिफिट बता रहे हो, अब इस बेनिफिट आने की
डेट भी तय हो गई है कि ये बेनिफिट 22 सितंबर के बाद आएंगे। तो 22 सितंबर के बाद कस्टमर्स को बहुत फायदा होने वाला है, बहुत अच्छी बात है। But don't you think that many customers are now holding back their purchases, holding back their expenditure during ever since 15th of August? कि अब तो जब रेट घटेगी तब खरीदेंगे, तो इन 1.5 महीने में वेंडर्स का सेल वेल कम हो गई होगी, अब गाड़ी अभी नहीं खरीदनी भैया, 22 सितंबर को रेट कम हो रही है उसके बाद ही खरीदेंगे। तो इन 1.5 महीने में तो बड़ा बैंड बज गया होगा सबका, वेंडर्स का। हर चीज को आदमी पोस्टपोन कर रहा है एक्सपेंडिचर को। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस? आई थिंक इट इज अ मिक्स। जैसे आपने गाड़ी की बात करी, सो मैंने ऐसे भी लोग सुने जिन्होंने बोला कि जल्दी खरीद लो गाड़ी, बिकॉज लग्जरी कार थी तो वो महंगी होने वाली थी, कुछ 28 की जगह 40% स्लैब में जाने वाली बट थी। लग्जरी वो 40 नहीं, पहले पहले पड़ता था 41 42, अब 40 हाँ, पड़ेगा, उल्टा हो गया। 43. लग्जरी कार It भी was 1% 43. सस्ती होने वाली It है। was 43। 43. सो Princess. सो आई थिंक अभी जो अपार्टमेंट मैंने जैसे हमारी इंडस्ट्री का बताया रियल एस्टेट का, उसके अंदर बहुत सब्सटैंशियल इम्पैक्ट अभी नहीं है, फ्यूचर में होगा प्राइस हाइक के फॉर्म में। सो वहाँ तो कोई होल्डिंग इन डिमांड है नहीं। एंड एज रिस्पेक्ट टू अदर थिंग्स जो डेली कंजम्पशन वाली है, लाइक लेट्स से आपका रेस्टोरेंट में खाना खाना, बेसिक सोप वोप एंड छोटा मोटा खाने का सामान, वहाँ कुछ होल्ड बैक हुआ नहीं है। ऑटोमोबाइल के अंदर जरूरी हो सकता है कि 15-20 दिन, अब तो 20 दिन की बात ही है, तो 20 दिन थोड़ा होल्ड हो जाए, बट अदर देन दैट नो मेजर इम्पैक्ट। और किसी ने तो छुट्टियां भी अपनी एक्सटेंड कर दी होगी कि अभी घूमने जाएंगे तो होटल का कमरा सस्ता मिलेगा, तो 1 महीने बाद ही जाते हैं। और सर आई आई इन्होंने दिन बड़ा अच्छा चुना है, इन्होंने नवरात्र का फर्स्ट डे चुना है। यस ये यस दिस इज व्हाट दे आर अनाउंसिंग, सेइंग दैट यस कि वैसे भी कनागत बीच में पड़ते हैं तो परचेजिंग डेफर हो ऐसे भी जाती है, कोई नहीं खरीदता, जब खरीदना चालू करेंगे तो सस्ता हो जाएगा। तब सस्ता हो यस जाएगा। दैट इज व्हाट द छुट्टियां भी आइडियोलॉजी आल्सो। दिवाली की, नवरात्रे की और दिसंबर की छुट्टियां सब उसके बाद में आने वाली है। सो यू आर सेइंग इज कोई मेजर इम्पैक्ट वेंडर्स पर इसका नहीं पड़ा है, कोई चीज हम्म खास पोस्टपोन नहीं हुई सीजनल है। डाउन है, सीजनल डाउन रहेगा ही नॉर्मल सर। नॉर्मल मिल्क और घी और पनीर तो वैसे भी नहीं पोस्टपोन कर सकते 2 महीने के लिए। और एक गाड़ी वाड़ी कोई एक आध आइटम है जिसको पोस्टपोन कर सकते हैं, बाकी कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट Except to राहुल, आई white हैव ए goods. क्वेश्चन फॉर यू एट दिस स्टेज। राहुल, ये वेंडर्स बड़ा एक सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तक हमारे एक आइटम टैक्सेबल था, और वो जो हमारा इनपुट था वो टैक्सेबल था, और अब वो इनपुट एग्जेम्प्ट हो गया है, अब उस इनपुट पर 0% हो गया है। लेकिन हमारा वो टैक्सेबल होते हुए उसका जो क्रेडिट पड़ा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो हम हमारे आउटपुट के अगेंस्ट में ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे? क्योंकि वो अब एग्जेम्प्ट वाले आइटम का क्रेडिट नहीं ले सकते, लेकिन ये पहले का खरीदा हुआ है, इसके क्रेडिट का क्या होगा? सर देखिए, जीएसटी लॉ में पहले भी प्रोविजन है और वही प्रोविजन कंटिन्यू रहेगा कि अगर आप आउटपुट पे टैक्स नहीं देते, इफ यू आर नॉट डिस्चार्जिंग योर टैक्स ऑन आउटपुट, यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो गवर्नमेंट ने ये एफएक्यूज रिलीज किए हैं और वहां पे ये क्लैरिफाई किया है कि अगर आपका पहले प्रोडक्ट टैक्सेबल था और अब ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सो देयर वुड बी अ डंप of ITC which was on that product, which by again because you are getting an advantage in terms कि भाई अब आपका आउटपुट का जो रेट है या एमआरपी जो लगा हुआ है आपको वहीं पे उसको ऑफसेट करना है और वो आपको रिवर्स ही करना पड़ेगा। और सेम प्रॉब्लम सेस के संग भी है, जो भी अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करिए, एफएडीए इज द फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी लिखा है कि हमारा जो सेस लगता था, अब आपने अगर उसको हटा दिया तो उसका क्रेडिट तो हमारे पास पड़ा हुआ है, जो हमने गाड़ियां ऑलरेडी मैन्युफैक्चर से लेके रखी हुई हैं, अब उसका क्या होगा? सो फॉर दैट ऑल्सो गवर्नमेंट टू एन एक्सटेंट हैज क्लैरिफाइड, सॉरी, you will not get any refund. This has clearly come out from the government side in the FAQs. They are filing a representation saying कि इसका कुछ adjustment मिल पाए, but I don't think so the government is going to give on that. And the law also doesn't provide कि उसका कोई refund मिले या कुछ और होए. That would be the cost to their profits. और इसी basis पे उनको reworking करनी है सारी अपनी prices की, जो future में होगी। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ऑल डीलर्स हैव टू रीवर्क ऑल दीज थिंग्स in the meanwhile before 22nd itself to plan their affairs, right? यस यस, तभी सीधा जो प्राइस नेक्स्ट बनेगा सर, वो सीधा इतना परसेंट रिड्यूस नहीं होगा। उसका रीजन यही है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट उनके ऊपर लग रही है उसको वो रिजेक्ट करेंगे, एंड बेस्ड अपॉन दैट दे आर गोइंग टू डिटरमाइन द प्राइसेस। तो क्या ये ऐसा वर्क नहीं कर लेंगे, ऐसा नहीं कर लेंगे, पहले वाले गुड्स रिटर्न कर देंगे और फ्रेश मंगा लेंगे 22 के बाद?
सर जिनके पास जाएगा तो वो रिटर्न पे भी वापस टैक्स मैन्युफैक्चरर के पास उसी तरीके से कैरी होना है, तो आई डोंट नो कि मैन्युफैक्चरर को लेंगे या फिर डिस्काउंट ऑफर करेंगे। मैन्युफैक्चर तो रिवर्स करके रिफंड ले लेगा अपने यहाँ। नहीं सर, वो भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अमाउंट वापस उसको क्रेडिट के फॉर्म में ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट रिटर्न कैश वापस कर देती है, दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट ओनली। मैकेनिज्म ऑफ द जीएसटी गवर्न्स लाइक दैट। होगा यही कि सर कहीं ना कहीं ये सेम प्रॉब्लम सर जब जीएसटी वैट से जीएसटी आया था तब भी आई थी। एंड देयर इन व्हाट दे डिड, दे ऑफर्ड सम काइंड ऑफ डिस्काउंट इंसेंटिव। Some load was taken by manufacturers, some load was taken by wholesalers, depending upon the transition, and finally it eased out. So this is a transition provision, but the lawmakers are clear. We are not going to give you any refund, and you have to reverse this. The clarity is there. ना अभी जो मैं छुट्टियों की बात कर रहा था, अभी दिवाली के बाद 22 तारीख के बाद ही जाना है छुट्टियों पे। और मुश्किल ये है कि बुकिंग तो पहले करानी पड़ती है, एकदम से तो मिलेगा नहीं। तो बुकिंग अभी कराई तो अभी तो जीएसटी है, ज्यादा है। बाद में दिवाली पर कम हो जाएगा जीएसटी। बुकिंग पे ज्यादा जीएसटी लग रहा है, ये वापस रिफंड मिल जाएगा? क्योंकि मैं ठहर तो बाद में रहा हूँ होटल में दिवाली के बाद, तो उस समय रेट कम हो जाएगी, तो मुझे रिफंड मिल जाएगा इसका? सर लॉ मेकर्स ने एक क्लैरिटी दी है विद रिस्पेक्ट टू कि अगर ऐसी एक्टिविटी है, क्योंकि सेक्शन 14 है जीएसटी लॉ का जो क्लैरिफाई करता है कि आपके ऊपर अगर चेंज इन इफेक्टिव रेट हो रहा है तो आपके ऊपर टैक्स रेट कैसे डिसाइड होगी। वो एक छोटा सा चार्ट है, समरी हमने सेक्शन 14 की स्क्रीन पर दिखा रखी है। टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर मैंने एक होटल बुकिंग का एडवांस अमाउंट दे रखा है और मैंने फ्यूचर की बुकिंग करा रखी है, तो लॉ मेकर्स ने प्रोविजन ये कर रखा है कि भले ही आपने एडवांस पहले दे दिया हो, लेकिन अगर सर्विस चेंज ऑफ रेट के बाद मिलती है, साथ ही साथ आपका इनवॉइस भी बाद में जनरेट होता है, तो आपके ऊपर रिलैक्स रेट लगेगी। सो इफ यू वांट टू गेट एनी बुकिंग डन, बुकिंग यू वांट टू गेट इट क्लोज, आप करवा सकते हैं। इसमें रिफंड मिल जाएगा, जीएसटी के डिफरेंशियल का रिफंड रिफंड मिल नहीं, जाएगा? देखिए आप पे टैक्स आज वो क्या कर रहे हैं, आपसे सिर्फ एडवांस अमाउंट लेके रख रहे हैं द सपोज होटलियर। 100%, मेरे से तो 100% एडवांस ले लिया उस। तो भी देखिए, आप तभी मैं आपको ये लॉ बता रहा हूं कि दैट इफ यू हैव मेड द पेमेंट इन एडवांस, हाउएवर दी आई वुड से द इनवॉइस एंड आल्सो द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हैपेंस आफ्टर दैट डेट। यस, तो तो लॉ, आपके हिसाब से मुझे टैक्स आगे वाली रेट से लगेगा, वो कम रेट है। अब मैंने यस, मैंने 100% एडवांस दे दिया, तो मुझे फिर वो टैक्स वाला पैसा वापस मिलेगा ना? मैं बिल्कुल ये बता रहा हूँ कि जो आपने रेट स्पेसिफाई करी है उसका बेनिफिट आपको होटलियर नॉर्मली पास ऑन करेंगे, बिकॉज लॉ ने उनको ये प्रोविजन दे रखा है। एंड फॉर दैट व्हाई यू हैव टू आर्ग्यू विद द होटल्स, और बेटर टू से show them over this slide and then discuss upon. And if anything in sort of litigation goes, so a lot of work for consultant friends who have joined, that you can use this provision and can try to push upon showing the intent of the government and try to take these benefits, because ये मेरे consultant दोस्त जो ग्रुप पे ज्वाइन करे हुए हैं आज, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह पे ही आएगा। तो जैसे ये तो एक घूमने जाने की बात है, लेकिन ये हेल्थ इंश्योरेंस तो आजकल बहुत सारी कंपनियां 3-3 साल का पैकेज चलाती है। 3 साल का एक साथ दे दो। मैंने तो पेमेंट कर दिया 3 साल का एक साथ, और उस पर टैक्स भी दे दिया। अब ये कह रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स ही नहीं है, तो अब क्या करें? उस बाकी 2 साल का आगे वाले साल का वापस मिल जाएगा? सर गवर्नमेंट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि आपका इनवॉइस पहले बन गया है, आपने पेमेंट पहले दे दिया, भले ही वो सर्विस कंटिन्यूअस नेचर की हो। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में नॉर्मली 3 साल का अगर आप प्रीमियम एक साथ पे कर देते हैं, यू गेट दिस बेनिफिट। सो बट उसका जो इनवॉइस है वो आज बन चुका है, उसका जो पेमेंट है वो आज आप कर चुके हैं। सो दे आर टू इवेंट टेस्ट विच इज प्रायर टू द इफेक्टिव डेट, जो स्लाइड से भी आपको दिख रहा होगा, वो पहले हो चुका है। तो अब आपको रिलैक्स रेट का ऑफर नहीं मिल पाएगा। दैट इज हाउ इट विल गो। मतलब ये हुआ, जहां पे होटल वाला बिल बाद में बना रहा है, अभी एडवांस की रसीद दे रहा है, वहां तो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन यस जहां इंश्योरेंस प्रीमियम में पूरे 3 साल की रसीद भी आज मिल गई, इनवॉइस भी आज मिल गया, पेमेंट भी हो गया, वहां मेरा जो टैक्स लग गया वो मेरी जेब से गया। Correct. तो वो आदमी ज्यादा फायदे में रहेगा जिसने एक एक साल करके प्रीमियम दिया, और मैंने 3 साल का एक साथ दे दिया, वो मुझे नुकसान हो गया। सर उस दिन तो फायदा लिया था उसने, क्योंकि उसको 2 साल और 3 साल का जो डिफरेंस था वो मिला था। मेनी टाइम्स यू आर लूजर, मेनी टाइम्स यू आर गेनर, यू कांट गो एन एब्सोल्यूट फॉर्मूला इन दिस। बट इतना तो मैं कर सकता हूँ, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अभी अभी पिछले 1 तारीख को, 1 सितंबर को ड्यू हो गया, और लेट फीस के साथ मैं उसको 22 तारीख को पेमेंट कर दूं।
मेरा सर नहीं, तो 1 तारीख को ये तो फिर मेरे टैक्स कम लग जाएगा, इनवॉइस आ गया लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया, ये तो कर सकता हूँ मैं। सर यहाँ मैं बोलूंगा देयर इज अ ग्रे एरिया व्हिच इज गोइंग ऑन एंड देयर इज अ डिवाइडेड व्यू ऑफ द कंसल्टेंट आल्सो, बट इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पे आपका इनवॉइस बन चुका है वहां पे शायद आप रिलैक्स रेट नहीं ले पाएंगे, दैट वुड बी माय व्यू, बिकॉज कंपनीज आर इन टुगेदर ट्राइंग टू टेक अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द सीबीआईसी ऑन दिस, कि ऐसे जो अभी ड्यू होने वाले हैं, मतलब गवर्नमेंट की रेट अनाउंसमेंट में, और लोग प्लानिंग करके उसको लेट करेंगे, जैसे आपने बताया लेट फीस पे करके, उनको हम क्या करें, बिकॉज लॉ में थोड़ी एम्बिग्यूटी है, दे आर लुकिंग फॉर LIC में मुझे 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, मेरी यस ग्रेस इंस्टॉलमेंट पीरियड मिलता 1 सितंबर को आ रही है, मैं तो अभी नहीं दूं, मैं 1 अक्टूबर को दूं, तब मेरा वो टैक्स लगेगा ही नहीं। ये मैं करूं तो मेरा बच जाएगा कि नहीं बचेगा? है। सर ड्यू मेरा डेट व्यू है पहले नहीं की बच है, पाएगा, पेमेंट की डेट बाद की है। मेरा व्यू है नहीं बच पाएगा, बट वी विल सी वेदर एनी क्लैरिफिकेशन कम्स ऑन दैट अकाउंट ऑन दिस। All right. My next question to खींचा साहब। खींचा साहब, ये अभी यूएस टैरिफ की बात चल रही थी, इतने दिनों से चल रही है और अभी भी चल रही है। और यूएस टैरिफ की वजह से बहुत सारे एक्सपोर्टर्स अपना माल नहीं बेच पा रहे हैं। आपको लगता है इस जीएसटी रेट रिडक्शन का जो टाइमिंग है, ये मोदी जी ने, सरकार ने इसको भी ध्यान में रख के करा है कि कम से कम कंट्री की डिमांड बढ़ जाए, और वो जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे वो कंट्री में खपत हो जाए? क्या इससे रियली फर्क पड़ेगा कि वो एक्सपोर्टर्स का माल कंट्री में बिक जाए जीएसटी रेट कम होने की वजह से? तो हमको टैरिफ का इंपैक्ट कंट्री एज ए होल पर जो पड़ रहा है वो कम पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी? देखिए, लार्जली अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वी आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड विद रेस्पेक्ट टू ज्वेलरी एंड जेम्स एंड ग्रेनाइट एंड मार्बल. Marble, which was a product which also got affected on account of this tariff of US, has come down sharply from 12% to 5%. Means now one reason is take-home of the liquidity retention of middle class is increased drastically by 15% or so. Second is tax rate is decreased of GST. Certainly, this will increase the home consumption. And I feel that the decision of the Honorable Prime Minister and the entire cabinet of the government is given a good kickoff to the country, to the exporters, to have a breath of relief. Yes, yes. See the question. Yes. Mohit, what's your answer to the same question? Whether GST reform would help in tackling the adverse impact of US tariffs to some extent? Mr. Mohit, you are mute. आई थिंक आई थिंक इमिडिएटली तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा. इट इज मोर ऑफ अ सेंटिमेंटल थिंग राइट नाउ, एंड आई थिंक ग्रेजुअली इन 6 to 9 months, जब बिकॉज ऑफ कोर्स डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा ओपन हो जाएगा एक्सपोर्टर्स के लिए, बट वो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी डोमेस्टिक मार्केट में एंटर करने के लिए दे नीड सम ब्रीथिंग स्पेस. तो 6 to 9 months इज द मिनिमम टाइम जब तक इसका इम्पैक्ट एक्चुअली ऑन ग्राउंड आ पाएगा. बट तब तक हो सकता है टैरिफ भी कुछ बेटर हो जाए या सिचुएशन चेंजेस. बाकी इट इज मोर ऑफ सेंटिमेंटल राइट नाउ. इमीडिएटली कुछ भी फर्क नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है. ठीक बात. Yes, Rahul, I would like to seek your view on what GST consultants or chartered accountants or any advisors who are there right now, what they should do, how they should advise their clients, because there'll be many issues for the transitory time until the things are settled. Earlier it was taxable, now it is not taxable. Input credit available, not available. What preparation the GST consultant should do, how they should help proactively, how they can help their clients proactively, so that जो 22 के पहले काम करना है वो 22 के पहले हो जाए, 22 के बाद करना है वो 22 के बाद हो जाए. क्योंकि बाद में अगर समझ में आएगा 1 महीने बाद में कि ये करना है, तो फिर वो क्लाइंट और कंसल्टेंट के बीच में ब्लेम गेम चलेगा. आपने बताया नहीं, वो कहेगा आपने पूछा नहीं. So what actually consultant should do at this time?
सर एक चीज मैं सबको क्लैरिफाई अभी करना चाहूंगा, जो रेट नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट लैंग्वेज है विच वी ऑल आर अवेटिंग, a consultant should be vigilant and should read the bare text of those notification to understand what exactly the item which they are relaxing, so that tomorrow there should not be a classification issue. क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी जो बताया दैट इज अ प्रपोज प्रेस रिलीज, जहां पे उन्होंने जो बातें हैं वो कही है, बट वो एचएसएन के संग और एसएससी के संग स्पेसिफाई नहीं करी है। तो ये विजिलेंट रहना पड़ेगा उन्हें कि जैसे ही वो आती है अपने क्लाइंट के लिए एक अभी हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के मैंडेट्स है हमारे पास कि जैसे ही वो रेट रिलीज होती है, प्लीज सिट विद अवर एचएसएन, विद अवर एसएससी एंड रिकंसिडर दैट वेदर द रेट व्हिच वी विल बी फॉलोइंग इनटू इज करेक्ट और नॉट। एक तो ये काम करना है इमीडिएटली कंसल्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, अभी हमने डिस्कशन में यही समझा कि कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई चीज है जो कि मीट आउट करेगी फाइनली कि आपको क्या प्राइस रखना है। So a lot of assignments we are also getting we have started getting from our clients where they are saying that kindly sit and with us and let us know कि हम किन किन vendors से bargain कर सकते हैं on account of change in rate, कि अगर उनकी ये change in rate हुई है हमारे आउटपुट पे क्या हुआ वो तो आप बताइए। प्लस हमारे जो वेंडर्स हैं जो हमको प्रोडक्ट या सर्विसेज देते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो चाहे किसी और चीज की सर्विस हो, आप हमें बताइए, हम उनको इन्फॉर्म करेंगे एंड वी विल नेगोशिएट विद देम। सो दैट इज द सेकंड थिंग विच इज इन द प्रोसेस कि ये होना चाहिए। बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर पाए ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत सारे 12% कंसेशनल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के रेट थे, जहां पे आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई एक्टिविटी करते हो तो वो चेंज हो गए। अब उनके अंदर एक बड़ा चैलेंज होगा कि वो 12% से 5 में गए या 18 में आए। और वहां पे एक और मुझे प्रॉब्लम एरिया दिख रहा है कि वहां पे आपको गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में जो क्लॉजेस होते हैं जहां पे प्राइस रिवीजन अवेलेबल होता है, उनके लाइट में कंप्यूटेशन करके रिप्रेजेंटेशंस फाइल करने पड़ेंगे। So, what I am suggesting to all my consultant friends who are coolly into, I would say, advisory to the clients in indirect taxes, they have to sit with them एंड वर्क अराउंड कि उनकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग कितनी चेंज हो गई और उसका इम्प्लीकेशन वो कॉन्ट्रैक्चुअली भी चेक करें, साथ ही साथ इसके अलावा जो हम पे वो नेगोशिएशंस कर सकते हैं उसके ऊपर भी एफर्ट करें। दैट इज वन इंपॉर्टेंट चीज। और जो एफएम ने इन सारे प्रेस रिलीज को 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बताई वो ये है कि जीएसटी ट्राइब्यूनल इज अबाउट टू सी द लाइट। ये आने वाला है, उस बहुत टाइम से ये पेंडिंग एजेंडा था गवर्नमेंट का। दे आर बीइंग आई वुड से फ्रॉम द ट्रेड रेगुलरली रिप्रेजेंटेशन कि हमारे मैटर्स जो है रिफंड्स के, डिमांड्स के, वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे आके अटक गए हैं, आप प्लीज हमें ट्रिब्यूनल दीजिए सो दैट वी कैन फाइल अपील्स एंड वेयर्स ओवर मैटर्स आर देयर वी कैन गेट द रिलैक्सेशन। तो इनका ये भी क्लियर एजेंडा है, बाय द एंड ऑफ सितंबर दे आर गोइंग टू make the portal live on which we can file the appeals, and for that they have said that till June 2026 we can file that. That's a window what they have given. So what I am suggesting to all, again my consultant friends, you have to take out all those old matters जहाँ पे आप ये जो ट्रांजिशन पीरियड है इसमें सारी अपील टाइमली फाइल कर लें, वरना एक और प्रॉब्लम में अपना क्लाइंट सिर्फ इसलिए नहीं आ जाए कि हमने उसे टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया कि आपकी फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील्स में जाने हैं। So that is also one thing what I am advising to all the consultant friends to work upon in terms of this thing. अच्छा, एक चीज और I quickly just wanted to say कि एक इन्होंने relaxed स्कीम लेके आए फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर दोज हु आर ऑफ अ व्यू कि 2.5 लाख तक का ज्यादा का टर्नओवर इनका नहीं रहने वाला है। उस स्कीम के बारे में भी गवर्नमेंट काफी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती है एंड दैट अवेयरनेस द 2.5 कंसल्टेंट lakh, फ्रेंड शुड आल्सो नो। 2.5 lakh tax दैट्स अ या मंथली टर्नओवर, दे आर सेइंग अप्रॉक्स मंथली टर्नओवर ऑफ योर्स। तो आपको जैसे पैन कार्ड आज अप्लाई करते हैं और ऑटोमेटिकली आ जाता है, वैसे ही ये चाह रहे हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी सिंपल स्कीम आ जाए। उन्होंने एक डेटा रिलीज किया है कि हमारी 95% एप्लीकेशन उसी नेचर की होती है, तो सिर्फ 5% में स्क्रूटनी करेंगे और 95% तो हम क्या करेंगे इसके अंदर एक रिलैक्स मैनर में रजिस्ट्रेशन देके उसको निपटा देंगे। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच आई वुड बी हाईलाइटिंग फॉर ऑल माई कंसल्टेंट फ्रेंड्स जो कि एडवाइजरी में है ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस और गेटिंग द रजिस्ट्रेशन डन। Yes, one question to Khicha Saab, and this question has been asked by Mr. Gautam Dey from JK Cements Limited. He wants to ask a question to you. And that question is that on elimination of compensation cess on coal of fuel by 400 rupees per metric ton, whether the cement manufacturing cost would not be affected, because now this compensation cess on coal would not be there, 400 rupees per metric ton. इससे सीमेंट बनाने की कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़े?
certainly the generation cost will come down. There are two sort of power plant. One is the cement manufacturing units which are having the power station within the premise of clinker manufacturing premise, where the fuel is common. In that situation, the power cost will come down to some extent to the level of this cess resentment. Otherwise, we expect that the cost of generation of captive power station may come down by 10 paisa per unit or so. Yes. In the case. Yes. So it'll bring down the cost. Cost, That yes. will further ease the cement pricing. Yes. So here's another question. Mr. Gautam Day is asking one more question, that from 22nd, the new GST rate on cement would be 18%. But in the cement industry, there is a practice of issuing yearly credit notes. By March 2026, cement industry gives the credit note by the end of the year. So he is asking that what GST rate to be applicable on credit note if the original cement sale is at 28% and credit note is to be issued on 31st March 2026. So far, there is no clarity about this. Yes. The circular says so. They will be issuing certain clarification under section 734, 15(3)(b) and all. So we are waiting for that. How the treatment of annual credit note will be taken care of, whether it will be at old rate or the new rate, because they already proposed for the delinking of the invoice with the credit note. As far as so far as it's been actually confirmed, but we are waiting for the clarity about this issue. So, there is no clarity so far as this Yes, point. so far, yes. Now, one of the viewers today has rather given an answer for that insurance issue which I had raised, and he's mentioning, CA Hemant is mentioning that insurance companies or insurance agencies have already issued a clarification that benefit of tax rate will not be allowed during the grace period. That is their view, sir. With all due respect, that is one. Right. That is right. But what he's saying is that insurance companies are bent upon not providing this benefit to the consumers during the grace period. This is not the view of the government. This is the view of the insurance companies. May I speak something about this? Yes, please. I'm just taking the part. In fact, देखा जाए ना तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा उस दिन हो गया जब मैंने पॉलिसी राइट कर दी. I already entered into contract. Its grace period is only nothing is a credit extended to me. So we have to take care of the date of contract, when the contract has been entered into, and the grace period cannot be the date of effective contract. So it's a matter of discussion. Rahul ji, it's a matter of discussion. सर देखिए, बात इतनी सी है कि अगर मैं इंश्योरेंस नहीं कंटिन्यू करना चाहूँ तो उनके उस डॉक्यूमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है. तो मैं तो यही कहूंगा कि आई वुड ट्राई टू कंटिन्यू आवर इंश्योरेंस आफ्टर 25 डेज मेरा मूड बना और तब तक 22 सितंबर आ गया. So yes, this is something which better clarification comes will be helpful for everyone. Yes, That's what my very fair, very fair. Yes, we have to wait. Mohit, a question to you, a little thoughtful question which has been asked by one of the viewers, and that is, what do you think? What will be the impact of GST reform on consumer price index and wholesale price index, CPI and WPI? Because and if that is positive impact, there is no impact, or what do you think? So I think there'll be a positive impact more on WPI than on a CPI. I think the impact on WPI should be anywhere between 0.7 to 1 percentage point, and on CPI it should be anywhere between 0.3 to 0.5 percentage point. Given that before this cut, it was already set at 2.8% approximately. So I think this is where it should be. So according to you, it will be Positive. a positive impact, and therefore it is likely to positively impact the interest rates, stock markets, because that is something which impacts many things in economy, right? Correct. So I think the interest rate should reduce by at least some basis point. Yes. Yes. So GST rate cut would impact the cost inflation. In turn, it will impact the interest rate. In turn, it will impact the stock prices. So all capital market as well as money market, there'll be impact on that.
Correct. Now, there is one question by Mr. Satish. And Mr. Satish is asking the question that concessional GST at the rate of 12% against EC is done away for oil and gas industry from 22nd September, making higher cost of production for oil and gas. Is it not going to ultimately hit petrol, CNG, PNG, LPG, and diesel, compelling to higher prices and leading to inflation? Can you please throw some light on this? Yes, Mohit, or Rohit, Rahul, or Arvindji, anyone? So, sir, definitely what I understand from the question of the user, they are saying that the input cost in terms of the industry where the credit is not available because output is VAT chargeable, they might be at a losing end because some of the items have moved from 12 to 18. But at the very same time, they need to appreciate upon, again, this not cannot be a standalone event. We need to very much understand this. This is one of the component of their cost. Now, I am aware of that there is something change in the ethanol prices also, and which are mixed in this while supplying. And at the very same time, what we have just now highlighted, that we might be also get a skilled labor at a lesser inflation cost, because every year the company was on account of inflation was increasing the salaries of the HR in terms of cost. But because now this is available and inflation rate reduces on account of the benefit which is being given, it may have an overall effect need to be checked. Directly what the user is asking, the viewer is asking the question, yes, it may create an impact which may increase the cost, but that cannot be an isolation identification of the cost price. You have to see the entire thing, then only a decision making can be done on that front. And that's why we am saying the consultant have to work around each and every component of their cost. Now, my last question to all three of you, again raised by one of the users, one of the viewers today, a very important question. And he's saying that these GST reforms or reduction of rate, where all across the board of most of the items, as we already know that there are a number of items where there is a rate reduction. So when there is a rate reduction, people do not much indulge in tax planning or evasion kind of things, either planning or evasion. So they more focus on business rather than focusing on how to reduce tax, whether to produce here or there, or how to route this, or how to package this, or how to do this. They apply their more mind on business. So he's asking whether this would not positively impact the business competitiveness or effectiveness, or more focus on business rather than planning the affairs in such a manner that the incidence is reduced. Yes, what's the view of all of you? You are all muted right now. All three of you are muted. So, of course, as I mentioned earlier, that the overall impact is on the positive side. The middle income will benefit a lot, which will in turn create more demands for the businesses like us and other businesses who are dealing with middle income. So I think the focus for next 2 quarter would definitely be on more sales, more production, and less on the things like tax savings. So yes, of course, the business optimization, sales, competitiveness should increase. Right? Yes, Kicha sir. Kicha Kicha sir, sir? please. It will certainly, it will aid the business competitiveness, number one. It will certainly increase the efficiency of business, the size of business, the quality of business. Because the entire efforts of the trader, of a businessman, which were in the planning of tax saving or whatever evasion, whatever word we can use, will not be more now. More transparency will arise. The relaxation will be given by the government as the ease of business. So it will increase the economy like anything. It will boost the economy also. Right? Yes, Rahul. I would again want to quote from the press release which the government has released. That's a 7th layer of next generation GST reforms.
So therein they have very categorically highlighted that we wanted to have the rationalization rates for fair taxation. That is in one of the Yeah. item which they have identified in the plan. And the ideology is very clear that first of all, there should not be dispute on account of different rate classification, because we understand this, when you have multiple rates, the classification problems comes up. So let's have that easy. And let's try to keep all those items which are directly impacting the consumer on the 5%, which is considered as the concessional tax rate. So at the end of the day, the user should not enter into any sort of tax evasion exercise. Because at the end of the day, if we talk about the indirect tax system, it is always starts from the point of consumer, because he want to save some penny. He doesn't want it to take that burden because it's a pass on to the dealer. And once the consumer start that tendency, the businessmen try to take the profit out of it, and they share among each other. So one says that, okay, a businessman has, I would say, profited something on account of indirect tax evasion. The answer is equivalently consumer must have also taken the benefit. So now they are saying, let's give them advantage. Let's have a stringent tax reform, stringent tax implementation system. Let's make sure that there's no revenue leakage by way of fake invoicing, by way of clandestine removal. And they've included technology also to a greater extent. Say e-way bill, e-invoicing, and they are very particular about it. Let's have everything in form of a nature wherein the refund to the exporters also come within a click without going to the department. So ideology of the government is very clear. Let's have a technology driven systems, no intervention of human in terms of movement of the goods, and then on that account zero tax evasion happens. And ultimately there need to be shift from the taxpayers the advantage of tax which they have paid in the past, and ultimately growth in the economy. That's the ideology of the government, and we can refer the press release for the detail, please. We have already surpassed our time by 6 minutes. Our program was supposed to end at 5:30. So I take this opportunity to thank Arvind Khichaji, Rahul Lakhwani, and Mohit Jaju for their very active participation, deliberation, and very good responses, thoughtful responses to the questions of the audience and to my questions. I hope we can have many more discussions of this kind in the times to come, but we'll like to keep the discussions only 1 hour so that the interest of everyone remains with the program. We would not like to prolong it. Thank you very much. So just to mention that we have made a help desk, which is available at the email ID info@chirramritlaw.com. So if any query remains, they can approach to that through our website at Chirramritlaw, just for the benefit of the larger audience, info@chirramritlaw.com. That can be accessed to. If you have any query, we are there to answer it. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you, everyone. And thank you, the audience, for participating in today's program. Thank you.